I hope all are back. Right. So Amit, yes, DNS is definitely required when it comes to Azure. Azure takes care of the DNS when it is for public IPs, or you can host your DNS to somewhere else also. We'll discuss that when we discuss DNS वाला topic. We are yet to come. But when it comes to your job profile, बहुत ही minimum आप लोगों का input होगा DNS को लेकर. So don't worry about it. So बस एज अ just टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप लोग नहीं करोगे. यस अमित. so ये जो C नेम A नेम रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं वो हमारा काम होगा? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट. इसके लिए सिस्टम एडमिन का टीम होता है एक. Okay. MX रिकॉर्ड्स हो, सी नेम हो, एंड व्हाट आर दो सी नेम्स, ए नेम्स होते क्या है. मे बी वी कुड हैव अ सेशन अ स्मॉल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अज्योर में आपके कुछ काम में नहीं आएगा. अज्योर के इंटरव्यू में कोई नहीं पूछने वाला है. क्योंकि लोड बैलेंसर को या ट्रैफिक मैनेजर को मैप करना होता है ना वेल उसके सी लिए. आज ही देख रहे हैं हम लोग लोड बैलेंसर अभी उसी पे आ रहे हैं. तो यू विल सी कि Okay. लोड बैलेंसर में डीएनएस का आपको कोई काम भी है भी या नहीं है. Okay. यू विल कम टू नो दैट. एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? सृष्टि, आर यू गेटिंग इट क्लियर? Yeah. हुसैन? योगेश भाई, आई होप इट्स क्लियर. Yes, sir. Sarmitra, I could not hear you. I hope you are listening and it's clear to you. If you have any questions, Yes, feel clear. it's clear, right? Okay. Okay, so anyone has any questions, please let me know. So this is a method, a DNS is a method, but this is definitely not a load balancing method. This is just to figure out this issue, that multiple IPs, one name, कौन सा IP किसको देना है. Okay, this has been sorted here. Again, the question is, ये डाउन होगा तो इस पर रिक्वेस्ट जाना चाहिए, ये डाउन होगा तो इस पर रिक्वेस्ट जाना चाहिए. How are we going to achieve that? So to answer that question's answer is your load balancer. Similar approach can be applied here. Same, यहाँ पर multiple IPs हो गए, यहाँ पर multiple ये है, but आप लोग कैसे इसको ये करोगे, make sure करोगे that all requests are going to one point, and then वहां से distribution होना चाहिए properly. Okay, so that we can achieve using load balancer. So now let's discuss about load balancer. One thing before we go to load balancer, guys, availability zone we discussed in isolation. Availability set we discussed in isolation. Virtual machine scale set we have already discussed, not today, but we have discussed in isolation. And virtual machine scale set इसलिए अभी मैंने छोड़ दिया because when we do load balancer तब फिर से इसको explain करना ही पड़ेगा मुझको. Hence I'm not discussing it right now. Okay, today guys, even if we have to take a third session, if you guys are up, we'll finish the load balancer topic with practical if you guys are available, because we have taken a longer, I mean not blaming you, काफी break हो गया है मेरी वजह से भी, so I'm planning to expedite it a little bit. Okay, so if you guys are available and if needed, we'll take a third session also. No, not 40 minutes completely, जितना भी time हो उतना. So coming back to this, load balancer वाले section पे हम जाते हैं. Before we go ahead, so I was saying that we discussed this in isolation. We discussed this in isolation. We discussed this one also in isolation. But all these technologies in isolation, they are useless. You discuss everything, your availability zone आपने explain कर दिया, सब कुछ कर दिया, but without load balancer or without load balancer, availability zone किसी काम का है क्या आपका? Do you think, do you does anything come to your mind के ठीक है लोड बैलेंसर के अलावा भी अवेलेबिलिटी जोन का ये बिजनेस रिक्वायरमेंट या बिजनेस नीड हो सकता है, ये बिजनेस केस हो सकता है? एनीथिंग कम्स टू योर माइंड? टेल मी. It has the data already in it, so I think that. For that we have, yes, that I mean technically is correct answer, that you are at least syncing your data. Okay, but for that we have a better option. We'll discuss that. Okay, as you have mentioned that now, based on this diagram, as a customer I was saying no, I do not want this, because अगर एक data center को उस building को कुछ हो जाता है तो my application is not going to run, right? Then you suggested me availability zone, जहां पे 3 data centers है सिटी में पूरा स्प्रेड किया हुआ.
I am still concerned about my application. Can I, this is very critical application, कोई maybe hospital का application है, patient से related application है, and most of the time we use this or we need this as a customer. I'm saying that most of the time we use this application or we need this application in situations like flood, जो पूरे city में आ जाता है, war which is happening in Ukraine, कोई आग लग गई, कुछ भी इस तरह का जो पूरा सिटी लेवल का डिजास्टर है, अर्थक्वेक जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो जाती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, दैट टाइम वी आर यूजिंग. एंड देन व्हाट डू यू से, यू आर सेइंग दैट मैक्सिमम the maximum this one you can give, what do you say, maximum high availability you can give me is city level, but that is not serving my purpose, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन काम में ही तब आता है जब सिटी में डिजास्टर होता है. You're giving me a high availability for Pune city, and God forbid if something goes wrong to Pune city, तो मेरा एप्लीकेशन ही वैसे ही डाउन हो जाएगा, जो उसका होल एंड सोल पर्पस है, जिस रीजन के लिए मैंने उसको बनाया है, राइट, कि वो डिजास्टर में काम में आए, वो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन ही नहीं चल रहा होगा. आई माइट हैव पेशेंट्स हियर, फ्लड के टाइम मेरे पास यहाँ पर hundreds of patients हो गए, but just looking at their आधार नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर, I will not be able to pull up their data कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, कोई डोनर है क्या उनके लिए अवेलेबल, या कोई ब्लड बैंक में इन्होंने सिक्योरिटी कर रखी है क्या, सो आई कैन क्विकली ट्रीट देम बिफोर इंजेक्टिंग हिम. इसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, किस दवाई की दवाई, किस तरह की दवाई मुझको इसको देनी चाहिए, is he or she allergic to something. All this information is saved in a database which I can fetch through my application, which is needed in these situations जहाँ पे hospital का use सबसे ज्यादा हो जाता है, right? But you are saying कि आप मुझको इस लेवल का ये दे रहे हो हाई अवेलेबिलिटी, कि अगर सिटी में कुछ हो जाता है तो मेरा ये डेटा सेंटर भी चला जाएगा, तीनों डेटा सेंटर, because here I'm talking about a city level disaster. I understand it's very rare, hypothetical भी हो सकता है, but these are the situation and we have solutions for that. And there are applications, guys, people, there are businesses, वो मांगते हैं इस तरह के solutions. Now it's up to them what they do. क्यों रखना है, it's up to them. Our job is to provide solution technically. That's it. It's their logic, their study. वो उनका lookout है, why they are spending this much on this application. वो सब उनका lookout है. We don't get into the business terms. We are just here to discuss technology. So he is saying कि नहीं, मुझको इस disaster से भी overcome करने के लिए कुछ चाहिए. So what do you have? What do you have? Do you have something? We have discussed this, guys. Otherwise, I wouldn't have asked you, but we have discussed this. Yes, guys. Do we have something for this? Anyone, what comes to your mind? I hope you got the situation, right? Anyone who did not understand the situation or my question? Are we talking about AS, sir? Sorry. Anything, whatever comes to your mind. What do you have for this? Regional. Regional what? Site recovery. BCP is fine, Yusuf, but how? BCP it's a business term. Okay. BCP could be from the people perspective also, FT's perspective also, manpower perspective also, technology from technology perspective, business continuity plan, it's fine. But how? Which service? Sorry, Amit, which service did you say? Azure site recovery. Site recovery. Okay. Anyone else? Regional peering. Peering, how is it going to help, Samitra? Was it Samitra, or who answered peering? Sorry, whoever was it. Hussain bhai, how is it going to help peering? Peering is just making a connection between two networks. No, not peering, pairing, like regional pair. One region is down, so we will deploy to other region. No, regional pairing is something different. We'll come to that, but that doesn't apply here. Disaster recovery and site recovery. Yes, disaster recovery, which Amit also, this is region pairing you're talking about, right? Hussain.
Yes, guys, correct. Yes, So yes, yes. yes. Yeah, Hussain, your answer is also correct. But here what I was looking for. Amit has answered, and Srishti has answered. So we are talking about a disaster recovery here. The name itself explains Okay. disaster recovery. So say, this is my application, or this is my that critical server. So what will I do here? And this I'm showing only on one server. This obviously can be configured on a group of servers. Yeah. So what will I do here? My current region, which is my current region for this one? Source region, which is my source region, जहाँ पे मेरा machine host हो रहा है अभी. East US. East US. Here you can see this is my source. Now I want to target a region, and I see this is my सोर्स रीजन, एंड यहाँ पर काफी डिस्टेंस है. आई मीन मोर देन 300 माइल्स का डिस्टेंस है. तो आई थिंक ऐसा कोई भी इतना बड़ा डिजास्टर रिकवरी नहीं आएगा जो यहाँ पर इससे ये भी इफेक्ट हो. सो आई फाइंड वेस्ट यूएस इज फाइन. और इफ आई थिंक नहीं यार वेस्ट यूएस भी नहीं, मुझको ये रखना है, दिस इज तो इट इज मतलब इलॉजिकल, इतना दूर आप सिंक्रोनाइजेशन करते हो, इट इज doesn't make any sense, but technically it is possible. If they want they can do it. So normally हम किस तरह का रीजन ढूंढते हैं ना, जो थोड़ा सा पास हो, इतना पास हो कि सिंक्रोनाइजेशन इजी हो, और इतना दूर हो कि जो भी डिजास्टर है उसका इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए. ये सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं. बाय द वे ये जो सेलेक्ट वगैरह करना है, दैट यू डोंट डू इट. you let user or client know that this is the option we have, these are the regions we have, इसका distance इतना है, एक थोड़ा सा केस बना के आप प्रेजेंट कर देते हो, and then you leave it up to them. Again, when I say you, this is not your job, guys. Again, this will be done by the architecture team. Okay, they will present it, client will say yes to one of them, then they will design it technically, it will come to you, you will just implement it. But you need to understand the concept के पीछे काम कैसे चल रहा है. Hence I keep explaining this. Otherwise you can stick to सिर्फ किस तरह से करना है, 2-4 steps we can do that, but that is not going to help you when it comes to interview. Steps हम बता सकते हैं, I can give it to you in writing also, okay, go here, click here, click here, click here, click here, and your load balancer is ready, and then now see you can work. But that is not going to help you. That is the reason I keep explaining the concept. So don't get confused कि यार ये भी करना होगा कि वो भी नहीं करना होगा, वो भी करना होगा क्या. At the end we will definitely have sessions जहाँ पे मैं इसको और narrow down करके बता दूंगा कि आपके roles and responsibilities क्या बोलना है, और कितने सर्कल में आपको आंसर्स देने हैं. एनीथिंग कम्स आउट ऑफ दैट यू कैन easily say nahi, that is a part of our architecture's team, it is a part of that team, it is a part of XYZ team. Okay? Don't hesitate to say that, because it is impossible for one team or one person to do everything. You cannot say यार कोड भी आप कर दो, टेस्टिंग भी आप ही कर दो, एप्लीकेशन होस्ट भी आप कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कर दो. That doesn't work. Okay? So let's say that I have selected this region example, anything जो भी मैंने इस पे ले लिया, randomly एक region मैंने pick कर लिया. Okay, so this is how you can have the high availability. So now if something goes wrong here, something goes wrong, though this is not load balancer वाला part नहीं है इसमें, this works in a different way. We have already done it. जिसको याद नहीं हो थोड़ा बहुत, they can watch the video backup और disaster recovery detail में हम लोगों ने cover किया है. Okay, so you can select it, and you can just click next 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 and finalize it, और उसके बाद आपको जो है ये मिल जाएगा. you do this, तो आपका कंटिन्यूस डेटा जो है सिंक्रोनाइज होने लग जाएगा वहां पर. सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग हियर, वहां पर भी जो है आप ये कर सकते हो, वहां से आपका एप्लीकेशन रन भी कर सकते हो, या फिर डेटा को कॉपी भी कर सकते हो ये वापस आने के बाद. दैट वाज जस्ट एन एडेड इन्फॉर्मेशन. वी आर अगेन कमिंग बैक टू आवर लोड बैलेंसर टॉपिक. ठीक है, सो दिस इज क्लियर टिल हियर. नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग लोड बैलेंसर. Anyone has any questions, guys? Yes, guys, any questions anyone has? Yes, no, maybe? No. Okay, No. good. So load balancer, guys, this is a technology and it is also a service. Okay, don't get confused. Load balancers, it is a technology also. Load balancing, it's a technology, and it is a service also.
See, load balancing, it's your technology. It doesn't matter, you don't have to be very precise. कभी आप load balancer को application gateway ये सब बोल दो तो चलेगा. But I'm just explaining to you. Load balancing, it is your technology. Specifically talking about Azure now. Load balancing तो हर जगह होगा. इसके आगे के जो terms है, these are Azure specific. Load balancing, it is your technology. It is in still available in on-prem. It is in Azure. It is in AWS. It is in Google. Everywhere it will be there. For load balancing, Azure has 4 services. Here it is, load balancing services. Now, what are those services? One is application gateway. This is also a load balancing service. Difference क्या है? Very important question. Almost हर interview में पूछा जाता है. Front door and CDN profile. This is also a load balancing service. Very famous, widely used. Majority of the time they ask this load balancer. Load balancing is a technology. Load balancer is the product or a service of Azure. And then we have traffic manager. Okay, so is it clear till here? Technology and services. Anyone getting confused? Please let me know. So load balancers, guys. Yeah, this is the difference we have at the time of interview, online interview. इसको खोल के ही रख लो आप सामने. इतना सा पढ़ने की जरूरत नहीं. 2-4 आप ये बता देते हो ना, तो इंटरव्यूअर himself will say okay, fine, stop. But बहुत frequently आज मतलब every second interview में पूछा गया, every second interview. In fact, more than that. 4 में से कोई एक इंटरव्यू होगा जिसमें नहीं पूछा जाता है ये. अदरवाइज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजीज में लोड बैलेंसर जो है, इसकी सर्विसेज क्या है? ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है. ये जो लोड बैलेंसर है हमारा, दिस इज द नेटवर्क लोड बैलेंसर. एप्लीकेशन गेटवे जो है, ये है वेब ट्रैफिक लोड बैलेंसर. ट्रैफिक मैनेजर जो है वो है डीएनएस बेस्ड ट्रैफिक लोड बैलेंसर. फ्रंट डोर जो है ग्लोबल एप्लीकेशन डिलीवरी. We are going to take a look at all of this. इनको सबको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे हम. नॉट टुडे, इसमें से एक कोई आज हम करने वाले हैं, बट विल चेक ऑल ऑफ दिस. सो ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बट इवन इफ योर डाउट्स आर क्लियर, इंटरव्यू आंसर में आपको यहीं से पढ़ना होगा. इट इज इजियर. ओके, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, वन ऑफ द की डिफरेंसेस. थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लो और मे बी देख के पढ़ लो. बट दिस इज अ की इनेबलर when you start answering for a load balancer and you know the layers, तो वो थोड़ा सा impact करता है. It doesn't matter whether you understand what is a layer 4, layer 7, OSI के 7 layers आपको याद है या नहीं है, उनके differences क्या होते हैं, exactly उसका मतलब क्या होता है. If you know it, it's well and good. नहीं भी पता है तो एक हाफ एन आवर के इंटरव्यू में और 1 hour 40 minutes के इंटरव्यू में, जहाँ पे मैनेजर भी होता है, थोड़ा सा HR भी पूछेगा, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दोगे, अल्टीमेटली दे आर लेफ्ट विथ हार्डली 40 or 30 minutes फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस. तो उसमें वो ये नहीं होने वाला है, लूप में नहीं जाने वाले. ओके, डिड यू से लेयर 4, सो व्हाट इज लेयर 4, डू यू अंडरस्टैंड लेयर 4? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. So even if you don't understand what is a layer 4 and layer 7 and layer 6 or anything, just mug it up or keep it open on your screen and read it. But make sure to mention this in your answer when it comes to differences. So you can say load balancer works on layer 4 and others they work on layer 7. Load balancer works on TCP or UDP. Others they work on TCP. Load balancer, the application gateway, traffic manager works on DNS. ये DNS नाम पे जो है राउटिंग करता है, वो सब कैसे होगी, we'll do that. Okay, then you can say the type. Load balancer में internal and public दोनों आता है, इसमें standard and WAF आता है. There are no types here when it comes to traffic manager. Front door में standard and premium आता है. इसमें differences कोई नहीं पूछने वाला with this question. अलग से कोई question आता है कभी कभार. Routing methods, this is very important guys. और ये हम अभी इसको हम explain भी करेंगे when we start practical. So when it comes to load balancer, it has hash based. We'll discuss now what is a hash based. Source IP affinity, we'll discuss that also because we'll start with load balancer. Okay, application gateway, path based. It's very simple. When we do it, I'll explain it to you. बहुत simple है path based. Traffic manager, performance, weightage, priority, geography, multi-value and subnet. These are self-explanatory. Performance में जो सर्वर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पे जाना चाहिए. Weightage में किसी backend के सर्वर में, when I say backend servers, these are the servers. Or let me come back to this diagram now. Maybe
these are my backend server. इसको मैंने ज्यादा वेटेज दे रखा है तो इस पे जाएंगे सारे. It could be priority, मैंने priority mark कर रखी है. Now how to do it, where to mark, वो सब हम practical में देखने वाले. Geographic, the request coming from this area, from UAE region, all they all should go to server 1. If I have described that rule, उस हिसाब से जाते हैं. Subnet, the request coming from this subnet, from Azure के subnet से request आ रही है तो इस server पे जाना चाहिए. That how you can, that's those are the routing methods you can use. Front door में latency, priority, weighted, session affinity. Again, we'll discuss that. Load balancer could be, it is a global service. Application gateway is a regional service. Traffic manager is a global service. Front door is a global service. I hope you remember what is the difference between regional and global service. Recommended traffic, this is for non-HTTPS. This is for HTTPS. Or I mean, almost they support everything, but front door, it's only for HTTPS and application gateway. Endpoints, it's okay if you don't remember it, that's completely fine. इतना दूर आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Endpoint monitoring, health probe, ये सब आपको ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं, but at least read it once. हाँ, SKUs एक बार पढ़ लेना कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है. Though it already gets covered somewhere here. यहाँ पर कहीं कवर हो रहा था वो. ये टाइप में ऑलरेडी कवर होता है, but still. Pricing बहुत बड़ा फैक्टर है, तो प्राइसिंग. So maybe initial 3 rows, network type, network protocol type, routing and pricing. इन 4 रोज को आप अपने इंटरव्यू के आंसर में दे दोगे, सो दिस आंसर इज क्लियर, ट्रस्ट मी. इस आंसर पे आपको कोई रॉन्ग मार्किंग नहीं होगी. और जो इंटरव्यूअर जहां पर भी अपनी शीट में मार्क वगैरह करता है ना, दिस आंसर विल बी क्लियर, और एटलीस्ट द कमेंट्स विल बी देयर. ओके, द नॉलेज अबाउट लोड बैलेंसिंग इज क्लियर और गुड, जो भी होगा. प्राइसिंग, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर चार्ज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रूल्स एंड प्रोसेस्ड डेटा. विल सी के नंबर ऑफ रूल्स क्या होता है, ये किस तरह से चार्ज होता है, ये किस तरह से चार्ज होता है, और ये किस तरह से चार्ज होता है. We'll see that. Okay, so let's go to the portal. Before I move here, I discussed many things here. Any questions do you guys have here? I went quickly क्योंकि ये सब हमको डिटेल में फिर से डिस्कस करना है, इसलिए I kept reading it. I did not explain it much because when we go to portal हमको सब अच्छे से explain करना है. Still, do you guys have any questions? I presume no. We'll proceed. No. Okay. Okay, so your load balancer, see, basic is free. When we take, there are 2 SKUs, basic and standard. Basic is free. Okay, standard का जो भी charge होगा वो होगा. Standard chargeable है, rule based charges है. First 5 rules are free. Regional service, इसमें regional भी बनता है load balancer, global भी बनता है. It could be VNet specific also, layer 4. Similar चीज को बस यहाँ पर लिखा है. You can read it from here also. Okay, now let's go to portal and start. So to have a load balancer, what do you need? I mean, ठीक है, लोड बैलेंसर तो आपने बना लिया, बट उसके बैकएंड में आप लगाओगे क्या? लोड बैलेंसर आपका कब काम में आएगा? When you have machines at the backend, right? Is it clear, guys? Any confusion? This is our load balancer. These are the machines at the backend. This is the public IP which users are facing. They'll connect here, and this is how the request get distributed. But ये किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह से, that we will see now. So for that, I will require some machines. Let me create some machines. Amit, can you start creating a machine in your resource group? Sure. This is the naming convention you can use. I'm using one. Just give me a minute, Amit. Let me create something, and then you can follow the same details. Okay. East US, we're keeping all of them in East US. I'm creating an availability set.
unless you have it. Okay, it's okay. Only one set is required. Fault domain, I'm keeping 2, update domain 5. As of now, select all Windows machine, anything but Windows machine. If it's good if you take all same versions. Make sure you select the smallest one, because if I use 4 CPU, you use 4 CPU, I'll create one more machine. There is a limitation for using on virtual machines, right? Then हम practical पूरा नहीं कर पाएंगे अपना. वैसे भी हमको machine में ज़्यादा कुछ करना है नहीं. So I'm taking the smallest one. You can also take the smallest one where I'm using just one virtual CPU. Keep a standard username and password. So in case we have to log in, tap out is the username I'm using. Password, you can select anything and just ping me. Basic details, I hope you guys remember all these. Premium desk or this disk, anything is fine. Hussein, you there? Yes, sir. Okay, Hussein, see, this is the reason I was asking you not to deal with PowerShell from day one. It's good to have, but see, now if you go through PowerShell, you will never ever come to know that there is such thing called availability set, which you can create from here. वो तभी पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे और अलग से बनाएंगे. But if you keep creating machines from here, ये सारे options आपको दिखने वाले हैं यहाँ पर. You'll come to know that which is mandatory, which is not. What can you have here? Can you have a space here? Can you have a uppercase? Can you not have an uppercase? वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी. अब यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से अवेलेबल है, सिक्योरिटी टाइप क्या होता है, what does it mean? All these options you will never ever see in PowerShell. If you, from day one, if you just copy and paste a request, what do you mean by run Azure with spot discount? You'll never come to know. If you don't come to this screen, you will never come to know. और इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा, you will be blank कि ऐसा कोई ऑप्शन होता भी है क्या? Just because you from day one you are using a PowerShell script, right? ठीक है, बाद में हम यूज करेंगे PowerShell script, but it is always recommended to for these guys also. PowerShell script मैंने काफी दिनों के बाद दी थी. So make sure that you go through this. ये सब आप लोगों को दिखना चाहिए. Would like to use an existing Windows Server license. This option you will never come to know. अगर आप सिर्फ PowerShell से ही खेलते बैठोगे, you will never come to know. At least now you know it. इंटरव्यू में कुछ इसकी बात आती है तो you will know कि हाँ ऐसा कोई ऑप्शन होता है. Disk. How to create disk? You get an option here to encryption, to delete the VM host once the VM is deleted. With that, the disk could also get deleted. ये सब आपको यहाँ से नहीं मिलेगा. If you want to attach an existing disk, if there is any, or you want to create a new disk, a data disk I'm talking about here. Okay, advanced में और कुछ option है हमारे पास. Unmanaged disk है. So Amit, we are using this VNet, and I guess don't you have a subnet managed? Amit, do you have any subnet in your resource group? No, nothing. Guys, this is about to finish in 10 minutes. Do you want to continue tomorrow or today? Let me know. You can do it tomorrow also if you want. Whatever suits you. In 10 minutes, we are definitely not finishing this. So if you want, we can do some questions or some theory for 10 minutes, and tomorrow we can start with practical. I'm cool with anything. What about others? Do you guys have anything else? Can we start with Sorry, tomorrow did you say? Yeah. Okay. Hussein, what about you?
No worries, anything. योगेश भाई? Oh, anything. You can start tomorrow, freshly. ठीक है, चलो, no issues, we'll do that tomorrow. So we have 8 minutes left. You guys have any questions, ask me. Meanwhile, what I'm doing here, I'm just creating an availability set. Why are we creating an availability set here? Wait, first let me create this. Because to have a machine in load balancer, it is a requirement to have both machines in one availability set. That is the reason I'm creating an availability set. Proximity placement क्या है इसको हम बाद में देखते हैं. Okay, so I created an availability set. ये हम लोगों को कल चाहिए होगा when we start creating machines tomorrow. So we'll start creating. In fact, before the class only, I'll create 3 or 4 machines. I'll do that. और उस पे website वगैरह भी मैं host. I hope you guys don't want to see that, right? How to host a website वगैरह. That won't be a part of your job at all. So I'll do that before our class starts. What I'll do, I will at least have 3 servers. See, 3 servers will have here. I'll host 3 different websites, or maybe similar website, but with something different. So when a request comes from here, we should know कि वो divert हो रही है. Real time में but ऐसा नहीं होने वाला है. Real time में you will have the exact same data, same database होगा इन सबके पीछे. Similar website होगी, तभी तो user को seamless experience मिलेगा, right? Now if I, let's say Google, if Google plans to have different this one, different UI, or for example this only, Pune University, I am logging in, I get this page. You log in, you get some other page. Some third party logs in, they get some other page. Does it make any sense? Is it in high availability? Is it even the same application then? It is not, right? So real time में तो वो हमेशा data sync करके रखते हैं. Same website होगी, same features होंगे, exactly सब कुछ same होगा. और इनकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी कहीं और होगी. These are just machines. डेटाबेस जो है इनका वो तो कहीं और होगा, बैकएंड में, ताकि only if the machine is down, तो ये नहीं होना चाहिए कि उस मशीन का डेटा चला गया. That cannot be a case, right? So this is a database. Database is always connected to all of these machines. Are you guys getting the point? कि यहाँ ये कुछ भी हो जाए, whatever order has been placed, anything has been done, कुछ भी हो गया यहाँ से, so that data is being saved here. So tomorrow if this machine is down, then nothing, कुछ होना नहीं चाहिए किस चीज को, हमारे डेटा को कुछ नहीं होना चाहिए, just because machine is down. Is it clear, guys? Yes. Yes. And why I'm creating this, guys, so at least you should be be able to read diagrams, और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको वीडियो को देख के. ऐसा नहीं हो कि एकदम कुछ न्यू फील आना चाहिए कि यार ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, हाउ इज इट, कहाँ से कैसे कनेक्टिविटी जा रही है. दैट इज द रीजन इंस्टेड ऑफ MS Paint वी आर यूजिंग वीडियो. सो आई वाज सेइंग कि रियल टाइम में हमेशा ऐसा होगा, एग्जैक्ट सेम वेब पेज होगा, एंड ऑब्वियस है कि डेटाबेस तो सेम होगा. फॉर एग्जांपल Amazon का पेज यहाँ से दिख रहा है, तो पेज चारों सर्वर पे एक जैसा होगा, और बैकएंड में डेटाबेस तो एक ही कनेक्टिविटी है, तो इट इज ऑब्वियस कि सेम ही होना है. एक ही डेटा को वो एक्सेस कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो इफ द सेशन वाज हियर, तो डेटा सारा यहाँ सेव हो रहा था. इफ दिस सर्वर गोज डाउन, सेशन यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा, बट डेटा वही रहेगा. ओके, एंड वो भी सीमलेस एक्सपीरियंस होने के लिए दे विल कीप एवरीथिंग सिमिलर उन चारों सर्वर पे जो है. इनका UI वगैरह एवरीथिंग विल बी सिमिलर, एग्जैक्ट सेम. बट फॉर प्रैक्टिस, अगर यहाँ पर भी मैं सिमिलर वेबसाइट रखता हूँ, सो फॉर प्रैक्टिस हाउ विल यू नो? यू गाइज विल नेवर कम टू नो कि वो दूसरे सर्वर पे जा भी रहा है या नहीं जा रहा है. So for practice, what will I do tomorrow? Before our session starts,
I will create 3 servers. I will host websites on those 3 servers. ठीक है, उन 3 सर्वर पे वेबसाइट को होस्ट करूंगा मैं, एंड देन थोड़ा सा स्लाइड चेंज रख देंगे. सो वेबसाइट में मे बी आई विल राइट VM1, VM2, VM3. We'll put a load balancer on that. यहाँ पर एक पब्लिक IP होगा, and from here these are you guys. Maybe from your browser you can try the public IP which we assign to that load balancer, and then you should see कि आप कभी इस पे redirect हो रहे हो, कभी इस पे redirect हो रहे हो, कभी इस पे redirect हो रहे हो. We can shut down one machine and then you will see that you are redirecting only on 2 machines. Shutdown वाले पे कोई कभी नहीं जाएगा. So just to check, to verify कि routing सच में काम कर रहा है क्या, we will have to create a different websites on 3 of the servers. That does not mean in real time you will have different websites, because that is not the aim. The aim is to have the correct website, same data, everything same. That is high availability. Is it clear, guys, to everyone? Anyone who did not Yes. understand anything which I explained now? Yes, guys, anyone who did not understand? We have 2 minutes. If you have any questions, please ask. Meanwhile, I will create a virtual network here. In Amit's resource group, I will create a virtual network. We'll require it tomorrow. So in our job profile, we need to create this load balancer from start to end, और कोई part ही करना पड़ता है? कंप्लीटली डिफरेंट है. कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है जहां से सब स्क्रैच पे आप कर रहे हो तो वो होगा. कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ बना बनाया होगा, बस उस मशीन को जोड़ देना है बैकएंड में जाकर. That और completely ये depends on your project. और फॉर एग्जांपल अगर बैकएंड में कोई मशीन नहीं चल रहा है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, वी हैव टू लुक दैट एज वेल. वो भी completely डिपेंड करता है कि किस तरह का है. पूरा सेटअप आपने ही बनाया है. लेट्स से कि कोई नया सेटअप आया है, पूरा एक प्रोजेक्ट जीरो से आपके पास आया है, आर्किटेक्चर डायग्राम आपके पास आ गया, सब कुछ आ गया, आपने ही वो मशीन बनाई थी, उसके आईपी भी आपने ही असाइन किया था, आर्किटेक्ट भी आपका था, लोड बैलेंसर भी आपने ही बनाया, और उसके बाद भी कनेक्टिविटी नहीं है, देन यू हैव टू वर्क ऑब्वियसली. यू डिड समथिंग रॉन्ग. इफ इट इज ऑलरेडी अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो वैसे ही वो आपके पास नहीं आएगा. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है तो वो सपोर्ट टीम के पास ही जाएगा. ओके, क्योंकि इंटरव्यू में ट्रबल शूटिंग के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना वो कि हाँ, वो आई हैव backend टोल्ड यू में. ऑलवेज सी गाइस, दिस इज द प्लेस. यहाँ पर जाइए, जितने यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सप्लोर देम. यहाँ पर आपको इश्यूज भी दिया हुआ, उसके ट्रबल शूटिंग भी दी हुई है. दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर ट्रबल शूटिंग. यहीं से उठा के आप अपना इशू भी बना लीजिए. ओके, या देयर वाज अ टाइम आई found this issue that cannot delete Azure virtual network, it wasn't getting deleted, I had to do this, I had to do that. इस टाइप का आंसर आप बना सकते हो. Okay guys, less than a minute is remaining, so see you tomorrow same time. I'll be ready with the machines tomorrow. Sure. I'll be Thank working you, sir. from maybe I'll start from 1:30. Anyone wants to see how am I doing it, just ping me at that time. I'll share the screen. But the actual class is recording and class will start from 2. Okay guys, Sure. bye.